Hello students, I am Paromita Datta and I welcome you all to my channel. In this channel, I will be bringing contents related to biology for students of class 11 and 12 NCERT and those who are aspiring to appear for exams like NEET. In this channel, I will be explaining the concepts in a combination of Hindi and English. So let's begin this journey with the first chapter of class 11, which is the living world. So in this chapter, we will be covering topics like what is living, biodiversity, systematics and taxonomy, concept of species and taxonomical hierarchy, binomial nomenclature. These are included in your NCERT, but as per the NTA syllabus, what is living is there. So the first thing is what is living. Of course, everyone knows what is living organism and non-living organism. Like in this frame, I am teaching you. So everyone can say, सब कोई कह सकता है कि I am the only living thing here. ये board non-living है, ये marker non-living है. But then अगर मैं पूछ लूँ कि what are the features जिससे आप distinguish कर सकते हो between what is living and what is non-living? What tells them apart, right? So इस बोर्ड में लिखे हुए हैं कुछ features and you can see I have listed these features as defining features and non-defining features. So these all are the features that living organisms show with few exceptions. कुछ चीज है जो non-living भी दिखाते हैं. तो defining और non-defining क्यों? Defining features उनको बोला जाता है which is universally applicable to all the living organisms. Okay, सारे living organisms वो features दिखाएंगे और non-living में वो बिल्कुल नहीं होगा. Non-defining features वो है जो living organisms दिखाएंगे, most of them, but there would be exceptions. कुछ living organisms पे शायद ये applicable नहीं होगा. And कुछ एक है जो एक आध feature है, सिर्फ एक ही है ऐसा जो non-living भी दिखाएंगे. So let's look into them one by one. First feature is cellular organization. This is a very important feature of living organisms. We all are made of cells. अब living organism, the world is so diverse, unicellular से शुरू करके multicellular organ system तक हम हैं, right? अब हमारे ही body में यहाँ का cell ले लो या यहाँ का, they all are capable of carrying out all the life processes, right? So is the case with a unicellular organism also. Unicellular हो या multicellular, at the cellular level they are able to carry out all the functions of a living being. ऐसा कुछ हमें किसी non-living चीज में देखने को मिलता है. Say for example, if I take this marker, it is made up of different kinds of ingredients. कोई सा भी एक ingredient हम निकाल ले, so will it show the features of marker? Will it be able to write? No. वो राइटिंग पार्ट शायद एक ही चीज पे डेजिग्नेटेड है, राइट? और से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ बिल्डिंग, बड़ा सा बिल्डिंग है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स आर द यूनिट्स. अगर हम समझ के चले तो एक ब्रिक को अगर हम निकाल ले, विल इट गिव अस द फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग? नो, बट अ सेल इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग. Second is metabolism. Metabolism is what? All the chemical reactions that are going on in a living organism. It is a sum total of anabolic plus catabolic reactions, right? Non-living things do not show metabolism. अब ऐसा हो सकता है someone may argue कि in vitro lab में तो हम कुछ ना कुछ metabolic reactions create करते हैं, but that is called biological reactions. मतलब वो synthetically create किया जाता है. नॉर्मली किसी चीज में होता है क्या? नहीं, राइट? देन यू सी दिस इज इंटरेस्टिंग. रिपेयर एंड रीजेनरेट मैं यहां लिखी हूं और यहां पे ग्रोथ. सो स्टूडेंट्स में आस्क व्हाई रिपेयर एंड रीजेनरेट इज अ डिफाइनिंग फीचर व्हाइल ग्रोथ इज नॉट. सो लेट्स फर्स्ट लुक एट ग्रोथ. मैं इधर आ जाती हूं. व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज नथिंग बट द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज. वी ऑल ग्रो, राइट? अब इसको नॉन डिफाइनिंग हम क्यों कहते हैं? बिकॉज वी हैव सीन इन सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, से फॉर एग्जाम्पल माउंटेन
ओवर द ईयर्स उस पे स्नो के लेयर्स जमते जाते हैं, हाइट इंक्रीजेस. Sand dunes in desert with deposition of layers of sand, their height increases. Sedimentation. Rocks के ऊपर sediment layers जमते जाते हैं and that increases. So growth is something that is also seen in some of the living, non-living things. इसीलिए growth, although present in all the living organisms, is not considered a defining feature of living organism. ओके अब यहीं पे आ जाते हैं. ग्रोथ इज नॉट बट वाई रिपेयर एंड रीजेनरेट. अगर मेरा ये मार्कर आज खराब हो जाए, यहाँ पे उसको कुछ खरोच आ गया, ओके तो क्या वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा? विल इट बी एबल टू रिपेयर इटसेल्फ? नो. बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द कैपेबिलिटी टू रिपेयर. हमें यहाँ चोट लग जाती है, फिर से नया स्किन आ जाता है, राइट? खरोच आ जाती है, नया स्किन आ जाता है, एंड रीजेनरेट इटसेल्फ. Regenerate, like example planaria. If you cut it transversely, वो हर बार regenerate कर लेगा अपने आप को. Okay, so that is why regenerate is a defining and growth is a non-defining feature of living organism. Adaptation. इसको मैं माउंटेन हिमालय में ले जाऊं या डेजर्ट में या समंदर के पास, ओके या बहुत से फॉर एग्जाम्पल या यही तीनों एग्जाम्पल रखते हैं. विल इट शो एनी चेंज? नो. बट एडेप्टेशन, एनिमल्स हैव द, नॉट जस्ट एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेसिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड विथ एडेप्टेशन दे इवॉल्व, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बहुत ठंड कहीं चली, बहुत ठंडी जगह कहीं चली जाए, इफ आई गो टू अ वेरी कोल्ड प्लेस, आई विल स्टार्ट शिवरिंग, राइट? And then if I go to a very hot place, I'll start sweating. What are these? Adaptations, right? Response to stimuli. अगर कुछ मेरे पास कोई गर्म चीज आ रही है, बहुत ठंडी चीज आ रही है, अगर मैं किसी नोखीले चीज पे अपना हाथ रख देती हूँ, I immediately withdraw, right? Response to stimuli. इसको मैं कहीं पे भी रख दूं, इसको मैं गर्म तवे पे रख दूं, ये पिघल जाएगा, it won't move, right? So this is a defining feature not shown by any non-living things. Animals, plants दोनों में मिलता है. We can see response to stimuli in animals as well as plants. Is it? Shall I bring it a bit close? I hope it's clearly visible to you all, right? In animals, the response to stimuli is fast. In plants, it is slow. Then you may ask, what are the stimuli for plant? हम तो पत्ती को तोड़ के ले आते हैं. Stimuli to plants are factors like light, winds, temperature. Okay. Then consciousness. Living beings are conscious about their surrounding. Consciousness is not something that you will be able to, it's not a tangible thing. You cannot show what it is, but it is there. इसमें कोई consciousness है? नहीं है. So this is one of the most important and defining feature of a living being. Movements. Even if I am standing here talking to you, मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हो ही रहा है. Whether it is a heartbeat, whether my eyes are making movements, whether an amoeba is producing pseudopodia to move, digestion के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, peristalsis in the gut, right? So movement is something shown by living beings and not by non-living beings. Okay, now let us come to this side of the table. These are the features seen in living beings but not non-defining. Why? Let us look at the first thing, reproduction. Reproduction in living beings is of two types, asexual, sexual. We all know, right? Asexual is uniparental. You don't need two parents. Spores से ही हो जाता है. It can be vegetative or through spores. If it is vegetative, does not require any spores. If it is asexual, it needs spores but mitotically produced or does not need another parent. एक ही स्पोर एक ही पेरेंट से हो जाता है. So asexual reproduction is also uniparental. Sexual reproduction is biparental. You need two gametes. Okay, but animals like mule, it is infertile. Male honeybee, they do not reproduce.
Even in humans, we may have fertility issues for which not all human beings will reproduce, right? Same can be the case with many animals if they are infertile. In plants, say for example, if it is producing a male flower in which the anther is sterile, if it is producing staminodes, it won't be able to fertilize a female plant. So that is also फूल तो है, सब कुछ है, but it is infertile and it is not able to reproduce. This brings us to the conclusion that reproduction is not equally applicable to all the living organisms. Thus, reproduction, although it is a very, very, very important feature of all living beings, but not a defining one. Growth के बारे में तो मैं बोल ही चुकी हूँ. You can see it in non-living things also. Now let's see death. अब जो जीता है वो तो मरता ही है. Nothing is immortal. Then why death is not defining? See, what happens is that if we consider an organism like bacteria, unicellular है. This is one bacteria. It divides by fission, 2 daughter cells. फिर आगे चल के 2 daughter cells होंगे. So from 1 to 4. Now, this was the first bacteria. The moment ये fission होता है इसमें, it has divided into 2 daughter cells. What happened to the first one? Can you see it? You cannot. So its identity is lost. इसीलिए कहा जाता है कि these are kind of like immortal things. Death इनमें वैसा define नहीं किया जा सकता. That is why death is not considered to be a feature, a defining feature of living beings. Now, if you are challenged with a thing and you are asked to define कि ये living है कि non-living, you have to take not just one but few of the important defining features, combine them and then define it whether ये non-living है कि living है. अगर उसमें खाली growth देख के आपने कह दिया कि ये living है, then that's not right. Okay, so not one trait of living organism is enough to categorize anything as a living or non-living. With this, we are done with what is living. अब देखते हैं biodiversity. Let's look at what is biodiversity. Biodiversity is the diversity of all the living organisms, from unicellular to multicellular, plants to animals in the biosphere, right? At present, it is said कि जितने भी living organisms हैं, of that we know 1.7 to 1.8 million species. They have been named. Okay. Now, let us look at what is systematics. Systematics is derived from the Latin word systema. Systema का मतलब क्या है? Systematic arrangement. Okay. But what is systematics? Systematics is the study of this biodiversity along with the evolutionary relationship between various living organisms. Clear? If systema means systematic arrangement, systematically किसी भी चीज को arrange करने के लिए, living beings को arrange करने के लिए, what are the 3 main things you need? Nomenclature, identification and classification. Right? Now that brings us to the next question. What is taxonomy? Taxonomy is nothing but the study of principles and process of naming, identifying and classifying living organisms. Clear? So who is considered the father of taxonomy? Carl Linnaeus. Okay. Now taxonomy के ये 3 important steps है. So can we say then systematics is nothing but the study of biodiversity plus evolutionary relationship, जिसमें कि ये taxonomy भी included है, right? Now let us look at these 3 things. What is nomenclature? So first step is nomenclature. So what is nomenclature? नामकरण. But ऐसे ही कोई कुछ भी नाम रख दे? नहीं. See, we have local names. Worldwide, any living organism is known by its local names. But if you are trying to attempt a scientific study for that, that is when it is going to create confusion, because one man from India, one from Africa, one from America will come together to discuss about one species. But because
if there is no standard procedure of naming, they'll call it by different names and it will just create utter confusion, right? So what is nomenclature? It is a scientific way of naming a living organism. यहाँ के कुछ रूल्स है जिन्हें फॉलो करके नेमिंग किया जाता है. So for plants, what are the rules that is given by ICBN, International Council of Botanical Nomenclature? And for animals, it is ICZN, International Council for Zoological Nomenclature. Clear है? Now let us look at ये scientific way of naming क्या था. So Carl Linnaeus had given a method called binomial nomenclature, और scientifically इसी naming method को हम मान के चलते हैं. What is binomial nomenclature? So binomial means हर नाम के दो हिस्से होंगे. Not पारोमिता दत्ता जैसे हमारा है. पारोमिता तो शायद कहीं पे भी खड़े होके पुकार लो तो 100 पारोमिता मिल जाएंगे, बट पारोमिता दत्ता कहो तो शायद the number will come less, right? Same here, by each and every species will have two parts in their naming. The first part, यहाँ पे हमने example लिया है Mangifera indica, and then do you see here Lynn written? Mangifera indica is mango. The first part हमेशा will define the genus, okay, and it will start with a capital letter. So what are the rules? Any name is going to be of two parts. First part genus starting with a capital letter. Names are to be derived either Latin or derived or Latinized. Names have to be Latinized. Mangifera हो गया genus. Indica is the species. Okay. Indica जो species होगा that will always start with a small letter and written in italics. दोनों को हमेशा underline किया जाएगा. These are the rules, and then the author, the person who named it, उनका नाम बाद at the end will be written in abbreviation. So what does this name indicate? ये आम है, Mangifera is the genus, Indica is the species, and it was named by Linnaeus, right? कल को आप भी अगर कोई species निकाल दो तो यूं उनका नाम होगा, उसके पीछे आपके नाम का एक abbreviation. Clear है? So this is binomial nomenclature, and worldwide in the scientific world this method, these principles are followed for plants, animals. Okay. Now once you have named, what is the next step? Identification. ये आम है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, आप सबको मालूम, मतलब you know it, it has been named. But then आपको देख के पहचानना है कि ये आम ही है, ये संतरा नहीं है, right? ये टमाटर है, ये टमाटर एक सब्जी है, आम एक फल है. Just in a generic language, not in scientific. So similar thing is identification. What is identification? Finding of the correct name and place in the classification, right? जैसे मैंने कहा, ये आम है, ये टमाटर है, या ये आलू है. आलू एक सब्जी की तरह हम यूज करते हैं, तो और आम एक फल की तरह. So अगर आपने क्रॉस कर दिया, so that is not correct identification. Now let us look at classification. Classification. What is classification? Nothing but arrangement based on similarities and dissimilarities of any organism. Why do we need to classify? हम चीजों को classify क्यों करते हैं? Different categories में क्यों रखते हैं? For our convenience. So what is the importance of classification? It makes the study of this diverse world easier for us. And when things are classified into different categories, it makes to study the relation between the different groups easier for us. And these studies have importance when in case of various applications in agriculture, horticulture, right? So classification is basically done to be better organized and ease of study. अब हम एक एक taxonomical hierarchy को देखते हैं. We will begin from the lowest and move to the highest. Species. The term species was given by John Ray. Okay. Species क्या है? Similar individuals on all features, जिनके सारे features मिलते हो, morphological हो, anatomical हो, जो आपस में what is the most defining thing? कि आप कह सकते हैं this is feature, this is a species, sorry,
that are able to reproduce among themselves. Okay? अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया सोलैनम ट्यूबेरोसम, सोलैनम नाइगर, सोलैनम मेलानगोना, ये आलू है, ये एक हर्ब है, ये बैगन है. अब क्या आलू और बैगन आपस में कैन दे इंटरब्रीड टुगेदर? नो, दे कैन नॉट. Experimentally, that is a different thing. Thus, this is a species and so is this. And they all belong to a common genera. This brings us to the next question. What is a genera? So, a genera is nothing but a group of related species, right? Genera, let me write it here. Group of related species. Related species. जैसे दो जेनस लिया है, एक है पैंथेरा, दूसरा इज फेलिस. पैंथेरा क्या है? इट इज द टाइगर फैमिली. फेलिस इज द कैट फैमिली. कैक्टस जैसे ये है डोमेस्टिक कैट, ये है यूरोपियन वाला और वाइल्ड, सॉरी. लियो है, टिग्रिस है, वन टाइगर है, एक लियो लेपर्ड है, राइट? सो दीज आर रिलेटेड स्पीशीज बिलोंगिंग टू वन जेनेरा. अब स्पीशीज में क्या होता है? सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज, मोस्ट. फिर जेनेरा में, जेनस में थोड़ा सा सिमिलैरिटी कम हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज द फैमिली. सो व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. लेट मी राइट इट हियर फॉर यू और एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं. फैमिली, कम टू द नेक्स्ट वन. फैमिली, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. पैंथेरा हो, फेलिस, जैसे दीज आर टू जीनस, राइट? अभी हमने प्रीवियस जीनस के एग्जाम्पल में देखा था, वन इज टाइगर और एक है कैट. दे बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी. सोलैनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये सब डिफरेंट जीनस है. They belong to the family Solanaceae. Clear? Then come order. Order is a group of related families. Families के दो examples देखते हैं. Convolvulaceae, Solanaceae. They belong to the order Polemonians. Felidae and Canidae एक cat family है, एक dog family है. They belong to the order Carnivora. And the next one is class. जैसे Primata. Primata is an order. ये ऑर्डर विथ मंकी, गोरिल्ला, गिबन सारे प्राइमेटा पे है. कार्निवोरा जैसे टाइगर है, कैट है, दे आर प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन एंड देन द किंगडम. फाइलम एनिमल्स में है, डिवीजन प्लांट्स में है. ओके? नेक्स्ट इज फाइलम या डिवीजन. इन केस ऑफ एनिमल्स हम इन्हें फाइलम बोलते हैं एंड इन केस ऑफ प्लांट्स पी वी कॉल देम डिवीजन. व्हाट आर दे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. ओके? जैसे फाइलम कोर्डेटा. अब कोर्डेटा में क्या क्या है? मैमेलिया, दीज वर द क्लासेस, रिमेंबर? मैमेलिया, एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, स्पाइसेस, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है. जैसे मैमेलिया में हमने प्राइमेटा पढ़ा था, कार्निवोरा पढ़ा था, राइट? दे वर डिफरेंट मैमेलिया. सो दोज प्राइमेटा, carnivora, what are they? They are the orders. Mammalia is what? They are the class. And what is chordata? That is the phylum. In plants, spermatophyta, it includes gymnosperms and angiosperms. And the highest is kingdom, Animalia and Plantae. All the animals are placed in the kingdom Animalia and plants in Plantae. In the next chapter you would अभी के लिए ये दो ही किंगडम हम रख रहे हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मोर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे द किंगडम्स, नंबर ऑफ किंगडम्स हैव बीन इंक्रीज टू बी मोर क्लियरर अबाउट इंक्लूडिंग मेनी ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट किंगडम्स. तो अभी के लिए हम एनिमेलिया और प्लेंटी ही रखते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, सिमिलैरिटीज एक एक कैटेगरी के साथ, एक एक हायरार्की के साथ कमते जाता है. स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है एंड द मोस्ट, जीनस में उससे कम, फैमिली में कम, ऑर्डर में और भी कम, क्लास में और भी कम, फाइलम में कम, एनिमल्स में सबसे कम, राइट?
जैसे हाथी लेते हैं और एक चींटी ले लेते हैं, दोनों ही एनिमल्स हैं, पर सिमिलैरिटी क्या है? नाउ सो इफ वी राइट देम, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Clear? KPCOFGS. याद रहेगा? अगर नहीं रहेगा, so especially for the students who are from Kolkata or West Bengal, they are aware of a medical college called KPC. So just remember it like this: KPC of genius students. Okay? Now खाली ये कैटेगरीज यहीं पे नहीं रह जाते. Taxonomists, for their convenience, they have in many cases divided them into sub order, sub family, sub genus, okay, subclass, subphylum, subkingdom. In higher classes, when you will read classification in details, you may go through this subcategories. So what is taxa? ये जो हमने different categories पढ़े, different hierarchical categories पढ़े, these are nothing but taxa. Okay? Now let us look at few of the examples of species along with their classification, like which genus they belong to, which family order, and these examples are given in your book. So this is a table of different species given in your book. Let us look at them. सबसे पहला हम शुरू करते हैं कॉमन नेम से. बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली ऑर्डर, क्लास and kingdom. Let me come this way. Human biological name is Homo sapiens. Homo is the genus. They belong to the family Hominidae. Order is Primata. Class Mammalia. Phylum Chordata. Kingdom Animalia. Dog, Canis familiaris. Genus is Canis. Family is Canidae. Order is Carnivora. Belonging to the class Mammalia, Phylum Chordata, Animalia. यहाँ से ये कॉमन है तीन चीज, राइट? हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का, म्यूसिडी, डिप्टेरा. फैमिली इज म्यूसिडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमेलिया. मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका. Mangifera is the name of the genus. Anacardiaceae is the family. Order is Sapindales, belonging to the class Dicotyledone. Angiospermae plants. And then wheat, Triticum aestivum. Triticum is the genus name. Poaceae is the family. Poales is the order Monocotyledone. And Angiospermae and plants. Okay? With this chapter, the living world. Next, I'll see you in biological classification, and I think I have made one error. मैंने ICBN and ICZN को council बोल दिया था, but ICZN and ICBN are International Code of Botanical Nomenclature, International Code for Zoological Nomenclature. Okay? First video थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है. Pardon me for that. But I hope you have liked this video, and I'll see you in the next video. Next chapter, biological classification. Please like, share and subscribe to my channel. Your subscription will give me motivation to improve on myself in making better content for you and bringing on such contents for you. And I'm going to see you very soon in the next video, biological classification. Bye for now.